की बात कर रहा हूँ, बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया क्या तर्क है, क्या उसके पीछे मंशा है, क्योंकि कामयाबी नहीं मिली। अगर कामयाबी मिले तो ठीक है। हताश होना भी चाहिए उन्हें। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप अनुभव देखिए गेंदबाजी में। मिचेल स्टार्क का नाम बहुत बड़ा है क्रिकेट जगत में। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन अपना 100वां मैच खेल रहे थे, उन्हें भी अनुभव की कुछ कमी नहीं है इस बॉलिंग अटैक में। और वही अगर आप भारत की गेंदबाजी की ओर देखें तो कुछ इस मैच में वो अनुभव लेके नहीं आए, इसीलिए ज्यादा दाद देनी होगी। जिस तरीके से लास्ट 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया ही खेमे के इन्होंने चटके, बस 95 या 100 रन में। अपील देखना होगा डीआरएस लेते या नहीं, या बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, और ओवर भी समाप्त 332 पर 9। Yep. Yeah. They'll be happy with that over. The batting team are now 3 for 96.
It's run away to the boundary. Ends the over. The over, the batting team are now on 100 for 2. Wait on. Yeah. End of the over. 1 run from it. Team are now on 101 for 2. Waiting. Wait. That's hit the pad. Huge appeal. That looked really close. He signals for the review, no hesitation. The impact is outside the line. That was borderline, but we're going with the umpire's call. The decision stands, not out.
Yeah. Good over that. The over, the batting team are now 2 for 102. Yeah. Great timing. Races to the boundary for 4. Yeah. That's 4. Superb shot. And that brings up 50 runs for this batsman. A well done half-ton. Yep. Catch. Keeper. The batsman seemed to misjudge that entirely. Great bowling.
Well wide. Yep. Four runs there. Super shot. A change in the bowling lineup. The medium pacer is coming into the attack. Wait. Wait. That's four. Superb shot. That goes for four. Good shot. To the bowler! Big appeal. Was there a noise? That's not out. He signals for the review. No hesitation. पहली पारी में सिराज ने वार्नर को छठवीं गेंद पर ही चलता कर दिया था, मात्र एक रन वो बना पाए थे। तो इस समय वार्नर के पास भी मौका है इस टेस्ट मैच में कुछ कर दिखाने का, और सिराज भी इस आत्मविश्वास से गेंदबाजी करेंगे कि वार्नर को पिछली पारी में चलता कर चुके हैं, तो इस पारी में भी वो उन्हें जल्दी आउट कर सकेंगे। Yes, so the Australians have a pair of openers who will be a little short on confidence. Warner will be, Marcus Harris also will be, and so Indians should be taking advantage here of such a situation. So it's going to be Warner now to face Natarajan. Siraj, sorry, as Siraj bowls this time closer to the off stump. But Warner reads the ball well, reads the line, knows that it's going to be going away from him and allows the ball to go through, shoulders, arms. Yes, Siraj had accounted for Warner's dismissal in the first innings. And he'd be hopefully looking forward to repeating his performance here. He's bowled
mixed bag of deliveries to Warner, good and short, as well as a slightly fuller length. And this time again, bowls a tad short, does Siraj, as Warner once again shoulders arms and allows the ball to go through. The Australian batsmen, I think, will be, the openers will be playing for the shutters. They are not going to attempt anything audacious today. They're going to be intent on keeping their wickets intact. They know they have all of tomorrow. There is time in this match for them to put up a imposing total against India and put them under pressure in the fourth innings. So Mohammad Siraj once again runs away and bowls, this time short, and Warner pulls and flat batted, and this is going for 4 runs, yes, easily. The ball hard, and Warner timed it well, and Warner is off the mark with a 4. So a ये good लगा shot. कंज्यूमर चौका। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14404 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। ये आत्मविश्वास भरा शॉट था और उनके पाले में गेंद आए तो वो किसी भी परिस्थिति में गेंद को छोड़ते नहीं हैं। Yes, he's a batsman who likes to dominate the bowling. And once again, this is the next delivery. He drops it short, just push drives it. Just a gentle push, and the ball is raced away to the long off boundary for 4 runs. ये लगा कंज्यूमर चौका एक और। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14404 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया के पारी में लगातार 2 चौके जुड़ चुके हैं और जब हम कह रहे थे कि वो सुरक्षात्मक तरीके से आज का दिन निकालने की कोशिश करेंगे और उसी वक्त शायद ये बात उन तक पहुंच गई और उन्होंने 2 अटैकिंग शॉट लगाकर हमें गलत साबित कर दिया। और वार्नर की जो मूल प्रकृति है वो ही आक्रामक है, तो वो किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहते। ये कोशिश उनकी हमेशा रही है। Sam Warner cuts and cuts well. One will have to wait and say, yes, it's gone for 4. ये लगा कंज्यूमर चौका। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14404 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। Yes, and that previous shot of Warner, which is just a push drive, was sheer timing. This time, offering him a little width is Natarajan, and Warner capitalizes on that. Backward of point region, this is as good a cut as Warner plays, and he is racing away. Is Warner? That'll do his confidence a lot of good as well. All the runs scored in the Australian innings have gone to Warner. There is, of course, a cordon of 4 slip fielders and a gully behind Warner, waiting. And if he plays in this fashion, I'm sure Captain Ajinkya Rahane will be tempted to remove at least one of them. The next ball is in a better line, middle and leg stump. Warner taps it away on the onside. Not for runs this time. Australia 13 for no loss. And all the runs have come off David Warner's bat. He's in 13. He's faced 10 deliveries. He's had 3 very handsome-looking shots to the fence. बिल्कुल, और तीनों चौके ऐसे थे जिसमें उनका पूरा, और जब शॉट निकला तब ही ये तय हो चुका था कि ये 4 रन के लिए जाने वाला है। निश्चित ही ये वार्नर के आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा है। ये श्रृंखला उनकी बहुत अच्छी नहीं रही है और पिछली पारी में भी वो सस्ते में आउट हो चुके थे, तो इसलिए निश्चित ही ये खुराक उन्हें बहुत प्रेरित करने वाली है। अगली गेंद, और नटराजन के ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से जाने दिया हैरिस ने विकेट कीपर के लिए। भारत का ये एक रणनीति लग रही है ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी करके ललचाने की, क्योंकि 4 स्लिप, एक गली और पॉइंट एक तरफ से पूरी तरह घेरा हुआ है, जाला बनाया हुआ है। उस जाले में बल्लेबाजों को फंसाने की है, लेकिन अब तक तो इस तरह की कोई कामयाबी गेंदबाजों के हिस्से में नहीं आई है। Absolutely, and Natarajan will be looking for a wicket here, serving. The shadows really lengthening across the Gabba here. It's only that the playing area, the pitch, and the area towards the third man region that's still bathed in the mellow afternoon sun here.
but otherwise the shadows really beginning to lengthen. And I hope the light permits the half an hour of play today, which is scheduled to make up for the lost time. And this time, digging it in short into Marcus Harris's body is Natarajan. And Harris rises in his toes and with a turn of the wrists, plays it away out on the onside. Now, Warner's tactics here are interesting. And I think from an Australian point of view important because, you know, by playing this brand of aggressive cricket without taking any risk whatsoever, Warner is showing his intent that Australia is not being dented by the fact that India have managed to reduce their margin to a slender 33. Marcus Harris, in the meantime, turns this ball to square on the onside for his first run. He is off the mark. और जो 3 चौके वार्नर ने लगाए हैं वो गेंदें कमज़ोर थी, उन्होंने किसी किस्म का ख़तरा नहीं उठाया है, गेंद कमज़ोर थी और उसी आधार पर उन्होंने ये चौके जड़े हैं। तो निश्चित ही वार्नर जैसे खिलाड़ी को अगर कमज़ोर गेंद मिलती है, उनके पाले में गेंद मिलती है, तो वो चौके लगाएंगे ही। Yes, he's got so much of experience behind him as David Warner. This time, once again, straying in line, Natarajan, going down the leg side. Warner turns around, swivels around for a flick, and it doesn't connect. But yes, Warner is showing his intent to dominate the bowling. That's what all batsmen with who are stroke makers attempt to do. They want to get on top of the bowling, dictate terms, make the bowlers bowl to their strengths. That's what they do. And this time Warner is driving, this time off a thickish out his edge. The ball is flying away to the point region. Will be stopped there short of the fence, but that will give Warner the opportunity to come back for 2 runs. तो इस तरह से वार्नर लगातार रन बनाते जा रहे हैं। इस बार हालांकि ये स्ट्रोक उतना आत्मविश्वास भरा नहीं था, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खाते में रन तो जुड़ ही गया है। वार्नर और हैरिस ने शुरुआत की है और उसके बाद आएंगे लेबुचैन। लेबुचैन के बारे में एक कहा जा रहा है कि एक इतना बड़ा कीमती बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को मिला है कि स्टीव स्मिथ के बाद संभवतः वही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो विश्व क्रिकेट पे बहुत लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया का परचम लहरा सकते हैं। Oh yes, he's what, you know, to quote a Hindi phrase, लंबी रेस की घोड़ा। बिल्कुल, लंबी रेस का घोड़ा, और ऐसा घोड़ा जो लगातार रन भी कूटता चला जा रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उनका टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण अपने कप्तान के सिर पर चोट लगने के कारण हुआ और उसके बाद दूसरे टेस्ट में भी उन्हें लिया गया, फिर उन्होंने अर्धशतक बनाया और तब कप्तान को वापस आने के लिए किसी और खिलाड़ी को हटाकर जगह बनानी पड़ी और उसके बाद उस्मान ख्वाजा जो टीम से बाहर हुए वापस नहीं आ पाए। Yes, and at one point in time, Usman Khwaja was one of Australia's most premium batsmen. बिल्कुल सही। अब वॉशिंगटन सुंदर आ गए हैं गेंदबाजी के लिए। कप्तान रहने ने बहुत ज़्यादा देर नहीं की, प्रश्न कर रहा है, उसके हाथ में गेंद थमा दी है और ये पहली गेंद उन्होंने बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से डाली, लेकिन उतनी ही चतुराई से गेंद को खेला गया। अगली गेंद ये मिडिल और लेग स्टंप की गेंद थी, स्टंप कवर किया वार्नर ने और उसे खेल दिया वापस वॉशिंगटन सुंदर के पास। वॉशिंगटन सुंदर ये मैच वो जीवन भर नहीं भूलेंगे और उसमें कुछ अविस्मरणीय क्षण और जोड़ना चाहेंगे। वार्नर का विकेट लेकर ये ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई गेंद को वार्नर ने छेड़ा है। ये एक अच्छा दृश्य है भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए, जो वो चाहते थे कि बाहर जाती गेंद को वार्नर छेड़ें और ऐसा ही हुआ। बहरहाल अपने ओवर की तीसरी गेंद के साथ वॉशिंगटन सुंदर ये ऑफ स्टंप के बाहर इसे कट किया है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, क्या वो रोक पाएंगे मयंक अग्रवाल? जी हाँ, अंदर गेंद को रोका गया, गेंद को थ्रो किया गया। यहाँ देखना होगा कि कितने रन वार्नर ने जोड़ दिए हैं, शायद 2 रन पूरे किए हैं। वार्नर तेज गति से रन बनाते हुए जा रहे हैं, अब वो पहुंच चुके हैं
सिन्हा जी 18 रन पर 33 रन की बढ़त के साथ पारी शुरू की थी ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया अब 20 रन बना चुका है। वार्नर खेल रहे हैं 19 रन पर और मार्कस हैरिस ने 11 गेंद खेलकर 1 रन बनाए हैं। अगली गेंद ऑफर मिडिल स्टंप पर, इसे बैकफुट पर खड़े खड़े ही उसे आगे की तरफ धकेल दिया हैरिस ने। हैरिस इस टीम में अपनी जगह स्थायी करने की कोशिश में है। ये ऑफ स्टंप के बाहर, ऐसे बाहर जाती गेंद को धीरे से दिशा दी पॉइंट की तरफ। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर पूरे हुए हैं, 20 रन बिना किसी नुकसान के। And for those statistically inclined, Ramesh Parab feeds me with this bit of stats. David Warner has played 10,000 balls, and the maximum balls faced by an Australian batsman is Alan Border, who faced some 27,305 deliveries. शुक्रिया रमेश परब जी। ये आंकड़ों का जो खेल है वो इस खेल को और रोचक बना देता है। And as India persists with Natarajan, the first delivery to Warner for fresh over. He's forward in defence. Australia 20 for no loss. Win to the 6th over of the Australian second innings. The lead now 53 runs. The shadows really lengthening across the Gabba, the woolen Gabba as it is known as. This time Natarajan bowls in a better line. He's settling down into a better line now, Natarajan. What impressed us all in the Australian first innings was Natarajan sticking to that tight line and then not giving the batsman any width whatsoever. He's been guilty of a little straying this time around, but now seems to be settling down into a better line, Natarajan. He's emerging from the shadows into the sunlight in his run-up. Comes in from close to the stumps, bowls to Warner. This time, once again, compelling Warner to play a shot on the off stump. Probing that corridor of uncertainty is Natarajan. That's the right line to bowl. I'm sure Ajinkya Rahane would be saying so in his head and heart. He depends on this young man who has stood by him in the Indian first innings, in the Australian first innings, picking up 3 Australian prized wickets. And this time, once again, bowls. This is, he's trying to deliver an away swinger to the left-hander. Drops it far too short for Warner to meddle with it or try to attempt to play a shot. Australia remain on 24, no loss. Natarajan walks back to the top of his bowling run-up in this waning evening light here at the Gabba. 6 overs bowled by Australia. 6 over in progress by India, sorry, in the Australian second innings. And this time on the off and middle stump, a bullish length delivery. Warner does well to tuck it away. Square on the onside towards the mid-on region. Quickly ambles across for a single. He's an extremely quick runner between wickets, Warner, apart from, of course, the array of shots that he has all around the ground. बिल्कुल सही कहा आपने। और उनका जो रन दौड़ने की शैली है और जो तेज़ी है, उससे मुझे पाकिस्तान के जावेद मियादाद की याद आ जाती कि वो बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रोक अगर कभी नहीं लगा पाते थे तो देखते ही देखते छोटे छोटे एक एक रन चुरा कर वो उनका स्कोर 30 से 35 रन तक पहुंच जाता था, और तब अचानक नजर आते थे कि वो मियादाद 35 रन बना चुके हैं, जबकि कोई बड़ा स्ट्रोक उन्होंने नहीं लगाया होता था। Oh yes, I mean, if you look at contemporaries, then this is something Virat Kohli also does so well, which is why he's never bogged down. He starts commanding the bowling because he never allows the bowler to dictate terms to him. And Warner is that kind of a batsman. He will keep the scoreboard ticking away, and he'll play those shots, and he will go for the ones and twos. That's the end of the day's play. So at the end of the day's play, Australia now, their scorecard reading 20 for no loss. Marcus Harris, 21 for no loss. Marcus Harris is on 1. David Warner is on 20. The Indian bowlers, 3 bowlers used so far. Mohammad Siraj, 2 overs, 1 maidens, 12 runs, and no wicket.
Natarajan 3 overs, 6 runs and no wicket. And Washington Sundar bowled at 1 over and he conceded 3 runs. So the total lead 54 for Australia, and Warner has sent the right signals. He is trying to command the bowling. One will have to wait and see how Marcus Harris faces up to the Indian new ball bowlers tomorrow. And also, India would be keen now that Warner is looking settled. He's looking dangerous to pick up Warner's wicket early tomorrow. बिल्कुल सही, और यही कोशिश आज के इस गोधूली वेला में भारतीय गेंदबाज कर रहे थे, लेकिन उल्टा वो सवासेर साबित हुए। उन्होंने 20 रन ठोक दिए, जिसमें 3 लगातार चौके, वो जो हैट्रिक लगाई थी चौके की। तो ये गेंद और बल्ले का एक संघर्ष है, और निश्चित ही कल सुबह-सुबह पिच की नमी का फ़ायदा उठाते हुए अगर नटराजन और सिराज कोई विकेट निकाल लेते हैं, और ख़ासकर डेविड वार्नर का विकेट, तो ये एक बहुत ही भारत के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और निश्चित ही हम देखना चाहेंगे कि क्या हमारा जो तीसरा गेंदबाज है, End of the over. Wow, that's been put away nicely. Wait!